Okay, very good morning to all of you. Last lecture we have completed our theory portion. Only two practical, two cell scripts are remaining. Today we are going to cover that thing. But before starting that cell script, I would like to inform you from tomorrow you have a Viva schedule, and in a Telegram group you got the Viva schedule. So go through it, and according to that, be present on a time. If you are having any query, any doubt, then you can contact your subject faculty. That is already written in a that circle, that Viva schedule. કાંઈ પણ તમારે ઓલું પ્રોબ્લેમ હોય તો તમારા સબ્જેક્ટ ફેકલ્ટીને કોન્ટેક્ટ કરો because they are appropriate to be the appropriate answer will be given to you. And I think tomorrow we have a OS Viva, right? So be present everyone on a time. જે લોકો અત્યારે એબસન્ટ છે તમારા ફ્રેન્ડ્સ છે એ લોકોને પણ જાણ કરી દો કે કાલે વાઇવા માટે પ્રેઝન્ટ રહી જાય. For the Viva, short question will be there. Short question: what is OS? What is the full form of RAID? Like this. Which algorithm is based? Okay. Second thing, as you know, Viva and submission is going from tomorrow. So all of you need to submit all the practicals, assignments on a Google Classroom. I have already created that assignments and the practicals on a Google Classroom. So upload it on time. For the evaluation, upload it on time. Abhishek Tiwari, after end of the fourth semester, it means after half of the engineering, you should know this thing. Viva should be from entire syllabus. इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए. ठीक है. And for mid sem 2 syllabus, I am typing right now in a Telegram group the mid 2 syllabus unit number 4. Let me check. This is our syllabus unit number 5, 6, 7. 5, 6, and 7 most are the units for the mid 2. So we prepare MCQs beyond. Okay. Sir. Hello. बोल नंची. सर. हाँ बोल संभळाय છે. यस सर हमारे पास नहीं है. क्या थर्ड से શું નથી? હેલો. हाँ you are સર audible. પીપીટી નથી અમારી પાસે. થર્ડ થી થર્ડ સુધી તો અપલોડ કરેલી છે. ખાલી મેમરી મેનેજમેન્ટ સુધી. મેમરી મેનેજમેન્ટ સર બાકી છે. પીપીટી ટુડે આઈ વિલ અપલોડ. નહીં સર, થર્ડ થી અપલોડ નથી કરી. થર્ડ થી કરેલી છે. You check it. If not, then I will upload it. Okay, let's start this remaining two practicals. 15.1. Is it visible? Yes, it is said. Write an awk program using function which convert each word in a given text into a capital. So whatever content we have in a file, it should be converted into capital later. So for that we have to create a file1.txt. This shell script will not run on online. So understood this one very well. Online नहीं होगी क्योंकि online file1.txt मैप नहीं हो सकती.
Suppose I have created file 1.txt here, hi space hello space bye, and in a second row good space afternoon. Here file 1.txt एक file है. Now awk is one command, and these two are the parameter. The first parameter print to upper $0. Then second argument is file1.txt. It means file 1 में जो भी है वो टू अपर होगा और प्रिंट होगा. दिस एक्शन विल बी परफॉर्म. प्रिंट होगा कैसे? टू अपर इज फंक्शन, सी में आपने देखा था, एंड टू लोअर कन्वर्ट इनटू अ लोअर केस. कैसे? $0 इट इज द पोजीशन. $0 का मतलब क्या? ऑल कॉलम्स. ऑल कॉलम्स मीन्स ऑल डेटा. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन बाइफरकेट द कॉलम. फॉर एग्जांपल हाई स्पेस हेलो स्पेस बाय है तो उसमें कितनी कॉलम है? 3, क्योंकि वाइट स्पेस से वो सेपरेट होती है. और सेकंड रो में कितनी कॉलम है? 1 एंड 2, 2 कॉलम. इफ आई से कॉलम नंबर 1 तो क्या डेटा आएगा हमारे पास? हाई एंड गुड. इफ आई से कॉलम नंबर 2 तो क्या आएगा? हेलो एंड आफ्टरनून. सो यहाँ पे $0 लिख रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ? इट विल प्रिंट एंटायर मैसेज, राइट? नाउ लेट मी राइट हियर 1. $1, it means it will give the column wise data. So 1, it means this is the first column, so hello and bye will be deleted. And second row good and afternoon will be deleted. This is the your output. Are you getting? Are you getting? If you are having a query, can it out, then you can ask again. Let me show you the another example. Let's say 2, it means second number column. So this is the first column, this is the second column, and this is the third column will be deleted. This is our first column. जहाँ से स्पेस आ रही है वहां से कॉलम सेपरेट होगी, तो फर्स्ट कॉलम हो गया. तो ये हमारा $2 का आंसर रहेगा. ठीक है. सपोज $3 यहाँ पे मैं रख रहा हूँ $3, तो क्या आएगा? बाय. यहाँ पे तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में कुछ नहीं है, तो सिर्फ ये आंसर आएगा. क्लियर? And so I am pasting question and answer both. You need to copy and paste into your Word file only. If you are having a query and doubt, then you can ask. Now 16. Write a program for process creation using GCC compiler and using a C program. Yes. Till now we have used the base file. Now we have to use the C program. So उसके लिए हमें REPL में ही करेंगे हम. REPL यहाँ पे सब लोग बेस फाइल कर रहे थे. Process creation using C. If you remember, प्रोसेस क्रिएशन हमने फर्स्ट यूनिट में कर दिया था बाय यूजिंग अ फोर्क सिस्टम कॉल. फर्स्ट यूनिट में फोर्क सिस्टम कॉल पढ़ा था. रीड, फोर्क, मिसलेनियस, सब सिस्टम कॉल सीखे थे. इसमें फोर्क सिस्टम कॉल का काम क्या था? इट विल क्रिएट दी अनदर प्रोसेस, और यू कैन से दैट चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता था. ठीक है. सो ये देखो हमारा REPL हो गया. अब यहाँ से आपको क्या चेंज करना है? ये बेस फाइल है. ठीक है. तो यहाँ पे हम सेल स्क्रिप्ट रन कर रहे थे. अब सी प्रोग्राम रन करना है, तो यहाँ पे जाके सी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है आपको. देन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट. डिलीट इट. यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, डोंट वरी. यहाँ पे पेस्ट कर दिया. अब हम पहले एक्सप्लेन कर समझ लेते हैं. दिस इज द हेडर फाइल. इंटीजर नेम, integer PID is one variable. Now PID is equals to fork. Fork system call will generate the child process. Whenever you call this system call, fork system call जब आप कॉल करेंगे, then this will return twice. ये आपको 2 बार रिटर्न करेगा. एक 0, value 0 to child process, and second is the parent ID, parent का ID.
ये दो चीज हमें रिटर्न मिलेगी, एक 0 टू चाइल्ड प्रोसेस, एक पेरेंट आईडी। ठीक है, अगर 0 से लेस देन वैल्यू है तो प्रोसेस क्रिएट इन कुछ एरर, सो इफ PID इज लेस देन 0, printf एरर एग्जिट 1, सिंपल। एल्स इफ PID इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हुआ, चाइल्ड प्रोसेस, क्योंकि 0 चाइल्ड प्रोसेस के लिए रिटर्न होगा। सो हेलो, आई एम द चाइल्ड प्रोसेस, printf my PID is this and my parent PID is this. Get PID and get PPID, these two are the inbuilt function. Now get PID means जो भी प्रोसेस है आपकी चाइल्ड प्रोसेस, उसका आईडी मिलेगा, उसका आईडी कुछ तो होगा। ठीक है, उसका आईडी कुछ होगा, तो वो हमें गेट PID मेथड से मिलेगा। एंड गेट PPID, पेरेंट्स PID, मतलब कि जो चाइल्ड प्रोसेस है उसके पेरेंट का आईडी। सपोज इफ आई से गेट PID, तो मुझे अभी आपका नाम मिलेगा सबका, लाइक उदित, नेहा, अभिषेक, खुशबू। ठीक है, but whenever I call get PPID method, at that time I will receive your father's name or your parents name। ठीक है, आपका नेम नहीं मिलेगा। सिमिलर वे एल्स पार्ट में हेलो आई एम द पेरेंट प्रोसेस एंड सेम लाइन गेट PID एंड गेट PPID, तो एंड एग्जिट 1 एंड रिटर्न 0। क्लियर? सो फोर्क सिस्टम ऐसे वर्क करेगा। लेट मी रन इट। देखो, yes, fork system call is the inbuilt system call, so every time you will get the different answer, and it is not same as the previous one। हर एक वक्त अलग अलग आंसर आपको मिलेगा। हेलो, आई एम पेरेंट प्रोसेस, माय PID is 20 and my parent PID is 1। हेलो, आई एम द चाइल्ड प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस का आईडी रिटर्न नहीं किया, कोई बात नहीं, कंपाइलर है। यहाँ पे देखो, हेलो आई एम द पेरेंट प्रोसेस, माय PID is 33 and my parent PID is 1। now it depends on a compiler, right now we are compiling on online, so every time we are getting the parent PID as a 1। आप कोई भी वर्चुअल मशीन में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करेंगे तो आपको कुछ और आंसर मिलेगा। यहाँ पे अभी 33, सो इस पेरेंट का नाम 33 है, उसके पेरेंट्स का नाम 1 है। फिर से मैं रन कर रहा हूँ, तो अभी देखो 39 हो गया। parent PID is 1, we are getting this same for this RFPL। कंपाइलर चेंज करेंगे आपको अलग मिलेगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर चाइल्ड प्रोसेस तो नहीं क्रिएट हो रही है, अभी इसमें नहीं हो रही है। हाँ, इसमें हो गई, देखो, हेलो आई एम द पेरेंट प्रोसेस, माय PID is 75 एंड माय पेरेंट PID is 1। सो पेरेंट का नाम है 75, उसके पेरेंट का नाम है 1। हेलो, आई एम द चाइल्ड प्रोसेस, माय PID is 76 एंड माय पेरेंट PID is 75। तो चाइल्ड का नाम क्या है 76, उसके पेरेंट का नाम क्या है 75, और 75 के पेरेंट्स का नाम क्या है 1। तो ये साइकिल हो गई, चाइल्ड इज 76, उसके फादर का नाम 75, और यहाँ से हमें मिल रहा है 75 से 1। क्लियर? दिस इज द हायरार्की। आप, आपके फादर और उसके फादर, ग्रैंडफादर, ये तीन चीज हमें यहाँ से मिल रही है। एक चीज यहाँ पे याद रखना, जो चाइल्ड का पेरेंट्स PID है वही पेरेंट का PID होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हर बार कॉमन ही आ रहा है। दूसरी बार रन करते हैं, यहाँ पे देखो 88 चाइल्ड प्रोसेस का है, पेरेंट PID उसका 87 है, तो यहाँ पे देखो पेरेंट का भी 87 ही है। ठीक है, यहाँ पे देखो चाइल्ड प्रोसेस का पेरेंट, चाइल्ड प्रोसेस 106 है, और उसका पेरेंट आईडी 105 है, तो पेरेंट का खुद का आईडी 105 ही है। देखो, क्लियर? आर यू गेटिंग एनी क्वेरी, एनी डाउट? So here it is the end of all practical list। let me paste here code। This is the code for 16। so right now 12 I have uploaded into Google Classroom, 13 I have uploaded in Google Classroom, only 14 is the, yes, this one, script validate to enter the date, that you need to that you already have performed,
that you need to copy and paste in a Word file, and 15 and 16 I have given to you. So run it, perform it, and make the Word file right now and upload it on a Google Classroom right now. Okay. So here it is the end of entire syllabus, and with all practicals and all theory portion. If you are having any query, any doubt, then you can ask. Otherwise, you may continue with this practical 12 to 16, make a PDF and upload it on a Google Classroom right now. એક ખાસ રિક્વેસ્ટ છે બધાને, તમે ટાઈમે અપલોડ કરજો બધું, એટલે ઇવેલ્યુટ ટાઈમે થઈ જાય, and you will get the good marks. And those who are absent regularly and today, inform them, inform your friends. अगर फ्रेंड नहीं है तो भी इन्फॉर्म करो उन लोगों को कि अपलोड कर दे सब कुछ जो करना है वो। ठीक है, जो भी पूछा है वो सब कुछ अपलोड कर दे एज सुन एज पॉसिबल। सब लोग सब कुछ अपलोड कर ही दो। Right now I am approving your ideas in Canvas and design engine portal. If you have not uploaded, then do it and upload it. Okay. If you are having any query, any question, any doubt, then you can ask at any time.
હા, ટીઈ ના વાયવા માટે તમને જે સ્ટેટિક વેબસાઇટ બનાવવાની કીધી હતી, એની અંદર તમે દર વખતે જે એડિટ કરતા હતા, એ જ રીતે બનાવી નાખવાનું. બરોબર? એ જ વસ્તુ દેખાડવાની છે, બીજું કાંઈ નહીં. જે તમે બધા કેનવાસ ને જે બધું તમે અપલોડ કર્યું છે, એ તમે સ્ટેટિક વેબસાઇટમાં ઓલરેડી એડ કરેલું જ છે. સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે 2 વાર તો પ્રેઝન્ટેશન લીધા હતા, એમાં એઆઈયુ ને એમ્પથી ને એ લીધું હતું. બરોબર? હા, તો એ જ વસ્તુ તમે આગળ કેરી ફોરવર્ડ કરી છે, એ જ વસ્તુ દેખાડવાની છે. ભલે સિમ્પલ હોય તો સિમ્પલ. એવું નથી કે એની અંદર તમે હાઈફાઈ કરો ને જીઆઈ આ તે ઇન્ક્રીઝ કરો. જે છે સિમ્પલ ટુ સિમ્પલ અને સ્ટેટિક વેબસાઇટ.
સ્મિત મોદી, કૃપાલ હિરપરા અને હર્ષિત શર્મા. Who is present? Yes, sir. સ્મિત મોદી હજી આપણે કેસ સ્ટડી જે લિનક્સનું ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં અપલોડ કરવાનું છે એ હજી નથી કર્યું. કહી દેજો હો. Yes, sir. કૃપાલ હર્ષિત. Now practical 1 and 2 was not submitted, let me check. I opened the Google Classroom and I'm checking what you have submitted or not. હર્ષિત, શ્યામ, અવધ, સ્મિત મોદી. આપણે લોકોએ હજી પ્રેક્ટિકલ 1 અને 2 સબમિટ નથી કરેલા. પ્રેક્ટિકલ 3 ના 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 પ્રેક્ટિકલ છે. પ્રેક્ટિકલ 1, 2 અને 3 સેલ્સ અપલોડ કરતા 2 મિનિટ થાય. અત્યારે કરો સ્મિત, કૃપાલ. પ્રેક્ટિકલ 3 સાવ નાનો છે તોય અવધ, ભાવિક, ભાવિન, ગૌરવ, હાર્દિક, હર્ષિત, જીનાલી, કુનાલ, માહિર, નિયતિ, ઓમ પ્રકાશ, પ્રશાંત, રાહુલ, પૃથ્વી, શ્યામ, સ્મિત, સુમંત. ઓલ ઓફ યુ નોટ સબમિટેડ. એટલા પ્રેઝન્ટ છો જે નથી એબસન્ટ છે એ બધાને ઇન્ફોર્મ કરો. પ્રેક્ટિકલ 3 હજી અપલોડ નથી કર્યો આટલા બધા સ્ટુડન્ટ્સ. ચેક 4 to 11. અને તમારા સબમિશન કેમ પતે, કેમ ટર્મ વર્ક્સના માર્ક્સ મૂકવો, 0 કરીને જવા દો. સન્ડે આવે છે, સન્ડે ઇવનિંગ સુધીમાં અપલોડ કરી દી બધું. સેમ પ્રેક્ટિકલ 4 to 11 માટે ભાવિક, ગૌરવ, હાર્દિક, હર્ષિત, કૃપાલ, નિયતિ, ઓમ પ્રકાશ, પ્રશાંત, રાહુલ, રિયા, ઋત્વી, શ્યામ, સ્મિત, સુમન. The students have not submitted practical 4 to 11. Now practical 12 to 16. What of this? એમાં બાકી જશે. Although few of you have submitted 4, 5 and 6. 6 students have submitted. And assignment 1. Assignment 1 I have given to you so before so many days. Just you need to upload it right now. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 students have submitted. So rest of students has to submit as soon as possible. Right? The practicals तो अभी upload करो. 12, 13 I have already uploaded. 15 and 16 I have given today. So 14 already you have practiced. Already we have discussed that. So make a Word file and upload it. Do it right now.
Still, I am not getting any practical or anything on a Google Classroom. All of you make sure you upload before the deadline. लास्ट डेट की वेट मत करो, उससे पहले ही अपलोड कर दो. It requires only half an hour, not more than that. And all of you, all the best for the midterm exam, final exam, and Viva. If you are having any query, any doubt, then you can ask.